Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will be discussing about surveillance of multi-drug resistance organisms. इस पूरे मॉड्यूल्स के अंदर हम देखेंगे कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म्स कौन से हैं, एमडीआरओज की जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस है वो किस तरह डेवलप होती है और इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि सर्वेलेंस के कंपोनेंट्स क्या हैं और किस तरह हम एमडीआरओज की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। Now we would like to understand some basic terms. Epidemiology is the study of distribution, place, person and time and determinant causes including agents, risk factors including exposure to sources and modes of transmissions of health related conditions. Prevalence is the number of existing cases of a particular disease. For example, number of people with diabetes in Pakistan. So that will be the prevalence. Incidence is rate of new events and the disease occurring in a population at risk for a specified period. मिसाल के तौर पर हम ये देखते हैं कि आज के दिन में टोटल कोविड-19 के कितने न्यू केसेस आए हैं, तो दैट वुड बी द इंसिडेंट रेट। सर्विलेंस केस डेफिनेशंस आर यूज्ड टू गैदर as much as possible the information about disease and to make sure it include all cases. For rare diseases, the case definition will be broader so that it does not miss any single case, and for more usual diseases it includes more specific case definitions. Surveillance is the process of collection of data of a disease in a systematic way, its analysis, interpretation for planning, implementing and evaluating the public health practice, and timely dissemination of the data for public health actions. Outcome surveillance, it's monitoring of a specific HAI, or you can say a specific outcome. For instance, in terms of HAIs, if we are working on SSIs, catheter associated UTIs, diarrhea, etc. The second one is the process surveillance. वो सर्विलेंस जिसमें हम प्रोसेस को मॉनिटर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मॉनिटरिंग ऑफ अ पेशेंट केयर प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग IPC प्रैक्टिसेस. कंप्लाइंस विद हैंड हाइजीन अगर हम देखेंगे तो वो प्रोसेस सर्विलेंस के अंदर आएगी. The timing of prophylactic antibiotics during surgery, use of aseptic techniques for central line insertions. So ये सारे के सारे process surveillance के अंदर आएंगे. अब हम देखेंगे कि continuous और periodic में क्या difference होता है. तो continuous is actually जिसमें data are collected continuously on a routine basis, जबकि periodic में आप एक different period के base पे data collect करते हैं. It can be on monthly basis, quarterly basis or yearly basis. Active surveillance is identification of HAIs by trained personnel who proactively look for HAIs using multiple data sources. We are using the examples of HAIs here, so you can generalize it as well. So active surveillance is conducted by trained staff using standardized case definitions and is more accurate than the passive surveillance. Passive surveillance. Passive surveillance of HAIs refers to identification of HAIs by patient care providers such as physicians or the nurses who did not receive any formal training in a surveillance and may not consistently use standardized surveillance case definitions to identify the HAIs. Again, जैसा कि मैंने पहले कहा, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे HAIs की एग्जाम्पल्स दी जा रही हैं, अदरवाइज आप इसको नॉर्मली किसी भी जनरल डिजीज के लिए यूज कर सकते हैं. नाउ वी विल बी कंपेयरिंग एक्टिव सर्विलेंस एंड पैसिव सर्विलेंस. एक्टिव सर्विलेंस प्रोवाइड्स कंप्लीट रिपोर्ट्स, टाइमली एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन. द डाटा इज मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड बेटर क्वालिटी बिकॉज इट इज बीइंग कलेक्टेड पर्पसफुली एंड एक्टिवली. जबकि आप पैसिव वन को देखें तो इट नीड्स लेस रिसोर्सेज, लेस एफर्ट्स आर नीडेड, so it lacks some important data as well. It is simpler one because no extra efforts are needed and it is inexpensive and less time consuming as well. This picture shows the surveillance process. So surveillance process starts with the surveillance planning. So planning में क्या कुछ आएगा, उसमें आप देखेंगे कि आपको क्या resources चाहिए, कौन से indicators चाहिए, क्या checklist चाहिए, आपको कोई security चाहिए, आपने किसी को notify करना है, कहाँ जाना है, कैसे ट्रैवल करना है, कैसे डाटा कलेक्ट करेंगे, तो वो सारी चीज़ें आपकी प्लानिंग में आएंगी. वंस यू हैव डन इट,
देन देयर इज अ नेक्स्ट स्टेप, द डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन फील्ड में भी हो सकता है, हॉस्पिटल में भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपकी स्टडी क्या है, मगर सेकंड स्टेप डाटा कलेक्शन ही है। जो डाटा कलेक्शन आप जो भी रिसीव कर रहे होंगे, इट विल बी एज पर द चेकलिस्ट जो आपने पहले आइडेंटिफाई कर चुके हैं। उसके बाद डाटा एनालिसिस है, आप डिफरेंट एनालिटिकल टेस्ट लगाएंगे डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द सर्विलेंस, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ योर स्टडी। फिर उसके बाद मिसाल के तौर पे अगर आप कोई कोहॉर्ट कर रहे हैं तो रिलेटिव रिस्क निकालना चाह रहे हैं, इसी तरह स्टडी की बेस पे आप डिफरेंट एनालिटिकल टूल्स लगाते हैं। और उसके बाद उसकी इंटरप्रिटेशन है कि ये डाटा एक्चुअल में कह क्या रहा है, इसका मकसद क्या है, डिजीज़ की एक्चुअल सिचुएशन क्या है। आपके पास सारा डाटा आ गया, उसकी इंटरप्रिटेशन आ गई, तो आप इसका क्या करेंगे, यू विल कम्युनिकेट इट, किसको, तमाम जितने भी रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनको, और उसके अलावा तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को जहाँ से डाटा कलेक्ट किया है, हर उस ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन को जिसका इस डाटा के साथ कोई ना कोई लिंक है। उसकी बेस पे जो भी आपका प्रोग्राम, पब्लिक हेल्थ का प्रोग्राम चल रहा है, उसको आप इवेल्युएट करेंगे, उसको आप मॉडिफाई करेंगे। नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म्स। So organisms that develop resistance to one or more classes of antibiotics. This may result in typical antibiotic regimen not working or becoming less effective. The problem with MDRO is that these are difficult to treat due to less sensitivity to major antibiotics. It requires high potency antimicrobials to treat that can have comparatively more side effects. Patients infected with MDROs have poor clinical outputs and are those MDROs can easily be transmitted as well. The burden of MDROs in health facilities. MDROs cause an increase of mortality, healthcare cost, and length of the stays in our healthcare settings. Estimates of economic cost vary, but they range as high as $20 billion in direct healthcare cost. More than 2.8 million antibiotic resistant infections occur in USA each year and more than 35,000 people die as a result. So ये जो हमने फिगर्स दी हैं ये यूएस की हैं। क्या आप बता सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर MDROs की क्या फिगर्स हैं, कितना वो कास्ट करती हैं और कितनी डेथ्स होती हैं? Absolutely not, because we don't have that data. So data is again the base of each and every intervention. We have the data, we know how the issue is, and then obviously we move toward prevention. Risk factors related to MDROs. It can be the duration of hospitalization. जितना ज़्यादा हॉस्पिटल का स्टे होगा उतना ज़्यादा एंटीबायोटिक्स मिल रही होंगी, क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में इस तरह का कोई ट्रेंड वैसे मैंने नहीं देखा कि एंटीबायोटिक्स को स्टॉप कर दिया जाए। तो जितना ज़्यादा स्टे होगा उतना ज़्यादा चांस है MDROs का। उसके अलावा हाई रेट्स ऑफ ट्रांसफ़र इन एंड बिटवीन द हॉस्पिटल्स, अगेन द सेम। लोकल रिस्क फैक्टर्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, लॉन्ग टर्म स्टे इज़ मोर इन द लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज़, और ओबियसली उसी वजह से इन्फेक्शन MDROs भी ज़्यादा होने के चांस है। इंटेंसिव केयर यूनिट्स में बहुत ज़्यादा एंटीमाइक्रोबियल्स मिल रही होती हैं और वहाँ पे स्प्रेड का चांस भी ज़्यादा होता है। हाई रेट्स ऑफ डिवाइस यूटिलाइजेशन, कोलोनाइजेशन रेट एंड प्रायर ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, कोमॉर्बिड सिचुएशंस एंड फ्रीक्वेंट एंटीबायोटिक एक्सपोजर इज़ अनदर काज। हमारे यहाँ देखा जाता है कि ओवर द काउंटर एंटीमाइक्रोबियल्स बहुत ज़्यादा मिल रही होती हैं। बहुत सारी छोटी फार्मेसीज़ में आप जब जाते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स मिल रही होती हैं, लोग उसको धड़ाधड़ यूज़ कर रहे होते हैं। कोविड भी हुआ है तो आपने एंटीबायोटिक ज़रूर लेनी है, तो ये एक ट्रेंड है जो कि गलत है। तो इसी ये सब तमाम चीज़ें मिलके आप जितने भी लोग ये ज़्यादा एंटीबायोटिक ले रहे होते हैं तो ये MDROs की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। हम आगे देखेंगे कि किस तरह एंटीबायोटिक का यूज़ जो है वो MDROs की तरफ कंट्रीब्यूट करता है। MDRO colonization can persist for long period of times, maybe for months, and result in silent transmission. Common colonization sites of MDRO includes nares, axilla, groin, rectum. हमने
HAIs के सेक्शन में भी पढ़ा था कि किस तरह जो स्टेफ ओरियस है नोज में कॉलोनाइज कर रहा होता है। सो दिस इज द टाइम फ्रेम कि किस साल में किस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट जो है रेजिस्टेंस आई है। आप स्टार्ट करें 1940 से, तो स्टेफ ओरियस ने सबसे पहले पेनिसिलिन को रेजिस्टेंट काज की, और उसके बाद पेनिसिलिन की रेजिस्टेंस से लेके अब तक कंटिन्यूसली आप नोटिस करेंगे कि मुख्तलिफ एंटीबायोटिक के अगेंस्ट बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो रेजिस्टेंस काज कर रहे हैं। दे हैव द एबिलिटी टू रेजिस्ट दैट एंटीमाइक्रोबियल, और ये कंटिन्यूसली चल रहा है। और हमारे पास जो न्यू एंटीबायोटिक्स हैं वो बहुत कम हो गई हैं। तो ये जो क्लैश है, ज़्यादा रेजिस्टेंस का होना और कम एंटीमाइक्रोबियल्स का बनना, ये एक बहुत ही हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए और हेल्थ इंडस्ट्री के लिए बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है। तो हम आगे देखेंगे कि किस तरह से रेजिस्टेंस होती है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। सो व्हाट इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस? द एबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया टू resist the killing effect of antibiotics. Resistant bacteria continue to multiply and can spread resistance to other bacteria. For example, there are few drug-resistant germs in the body. Antibiotic kills bacteria causing illness as well as the good bacteria that are protecting the body from infections. Drug-resistant bacteria have suitable environment now to grow in the absence of protective bacteria. Some bacteria give their drug resistance ability to other bacteria, thus leading toward more drug resistance bacteria. बैक्टीरिया के अलावा फंजाई में भी आप देखेंगे कि किस तरह से ड्रग रेजिस्टेंस आ रही है। So now this is another example of how antibiotics resistance spread. For example, इस मिसाल में देख लें कि जॉर्ज जो है he gets actually antibiotics and then he develops resistant bacteria in his gut. ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है ये जॉर्ज से भी फैल सकती है और एनिमल से भी फैल सकती है। मिसाल के तौर पे पोल्ट्री और एनिमल सर्विसेज में, हेल्थ सर्विसेज में एंटीबायोटिक दी गई और वहाँ पे क्या हुई, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हुई। अब उसकी ट्रीटमेंट के लिए जॉर्ज कहाँ जाएगा? होपफुली हॉस्पिटल में जाएगा। अगर हॉस्पिटल में नहीं जाता, वो सेल्फ केयर की तरफ जाता है और कम्युनिटी में रहता है। तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्होंने रेजिस्टेंस काज की हुई है, आर दोज हैव द एबिलिटी टू रेजिस्ट, वो हॉस्पिटल के थ्रू या कम्युनिटी के थ्रू स्प्रेड हो जाएंगे। इसी तरह जानवरों में भी अगर वो रेजिस्टेंस डेवलप होती है तो वहाँ से भी वो कम्युनिटी में आ सकती है। तो ये एक साइकिल कंटिन्यूसली फिर चलता रहता है। तो इसको आपने ख्याल में रखना है कि किस तरह एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है कम्युनिटी में रेज हो रही है। सो द रेजिस्टेंस कैन आल्सो अकर बाय जर्म डेवलप्स न्यू सेल प्रोसेसेस दैट अवॉइड यूजिंग एंटीबायोटिक टारगेट्स, सो चेंज इन द से बाइंडिंग साइट्स. It can also destroy antibiotics using different enzymes and proteins that broke down the drugs, beta lactamases etc. वो हम देखेंगे. Bacteria can restrict the access by changing entryways, or it can get rid of antibiotics using different pumps. Types of MTROs. How do antimicrobial resistant pathogen emerges? Antimicrobial uses. Failure to properly implement infection control practices. इसके अलावा जो biofilms हैं, as antibiotics have difficult to penetrate the biofilms, so उसमें भी जितने भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल जाता है to survive. How MTROs are identified? When a specimen, for example यूरिन भी हो सकता है, वुंड का कल्चर आपने कुछ भेजा हुआ है, gets collected, it is sent to the lab to be plated and then incubated so organism can grow. After it grows and the pathogen is determined, it is set up for antibiotic sensitivity testing, which is mostly automatic. तो उसके बाद आपको पता चल जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है और किस किस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट वो रेजिस्टेंट है और सेंसिटिव है. कर्वी बार. एंटीबायोटिक impregnated discs, zone of inhibition. मिनिमल इनहिबिटरी कंसंट्रेशन क्या होती है? इट इज एक्चुअली द लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग दैट स्टिल कैन इनहिबिट माइक्रोबियल ग्रोथ. द MIC या मिनिमल इनहिबिटरी कंसंट्रेशन will determine whether the bacteria is resistant to the tested antibiotic or not. Overview of the MTROs. Major MTROs are, for example, methicillin resistant Staph aureus,
vancomycin resistant enterococci, extended spectrum beta-lactamase producing enterobacteria, carbapenem resistant cyanobacter, carbapenem resistant enterobacteria, Clostridium difficile and Candida aureus. MRSA methicillin resistant staph aureus, आपने इसका बहुत ज़्यादा सुना होगा क्योंकि डेफिनेटली हमारी हेल्थ केयर सेटिंग में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। MRSA या staph aureus is actually a gram positive cocci, coagulase positive one, and it is resistant to oxacillin and beta-lactam antibiotics due to beta-lactamases. It can cause wound infections, bloodstream infections and pneumonia. Staphylococcus aureus commonly found on the skin or in the nose of healthy people क्योंकि वहाँ पे ये colonize कर रहा होता है। According to CDC, 33% of the people are colonized with Staphylococcus and only about 2% colonized with MRSA. तो ये USA की मिसाल है, एग्जाम्पल है। पाकिस्तान में ऐसा कोई डाटा मौजूद नहीं है क्योंकि कोलोनाइजेशन और उसके बाद उसमें से MRSA कितना है एक्टिवली ज़्यादा तौर पर चेक नहीं किया जाता। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट ओवर तकरीबन 3 लाख केसेस जो हैं 2017 में USA में आए थे MRSA के, जिसमें से 10,000 से ज़्यादा की डेथ्स हुई। और ये तमाम जो इन्फेक्शन का आना और उसकी वजह से जितना हेल्थ केयर के ऊपर बर्डन आता है, तो फाइनेंशियल बर्डन जो था वो इट वाज मोर देन 1.7 बिलियन डॉलर। और आज के अगर स्टैट्स देखें तो इट स्टिल स्टेट्स के 2% जो है MRSA मौजूद होता है। वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटेरोकॉक्सी, अब हम देखेंगे कि VRE कितना इंपॉर्टेंट है और कितना हद तक डैमेजिंग हो सकता है। सो इट इज़ एक्चुअली अनदर evil in the MDROs. It can cause blood, urine, surgical site infections. It includes Enterococcus faecalis, Enteroficus, ये दो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं एंटेरोकोकस के, ये इसके अंदर आते हैं। And nearly all VREs infections happen in patients with healthcare exposures. Long-term care residents are at risk. It is estimated that over 54,000 estimated cases were there in USA in 2017, जिसमें से 5400 की डेथ हुई। और फाइनेंशियल लॉस की अगर बात करें तो वो $539 मिलियन की हुई। रिपोर्ट सजेस्ट दैट ओवर 5 to 18% एज अ प्रेवलेंस ऑफ VRE इन USA। पाकिस्तान में इसका अगेन कोई डाटा नहीं है। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेसेस प्रोड्यूसिंग एंटेरोबैक्टीरिया प्रोड्यूसिंग GHR। Enzyme conferring bacterial resistance to penicillin first, second and third generation cephalosporin and azonium. 2017 में again there were 2 lakh cases of ESBL, जिसमें से more than 9100 deaths हुई। और फाइनेंशियल लॉस की बात करें तो 1.2 बिलियन डॉलर की है। फाइनेंशियल लॉस कहाँ कहाँ आता है? जब भी कहीं पे रेजिस्टेंस आती है तो उस पेशेंट को ट्रीट करने के लिए एक्स्ट्रा मेडिसिन की ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा स्टे की ज़रूरत होती है और तमाम रिसोर्सेज हॉस्पिटल के और गवर्नमेंट के लग रहे होते हैं। तो ये इस तरह से एस्टिमेट किया जाता है। कार्बापेनियम रेजिस्टेंट असिनोटोबैक्टर इज ऑलरेडी अ वेरी रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म, इंट्रिंसिकली रेजिस्टेंट एक्चुअली, and resistance to carbapenem further reduces the patient treatment options. Acinetobacter can contaminate healthcare facility surfaces and shared medical equipments if not addressed through infection control measures including rigorous cleaning and disinfection. Outbreaks in hospitals and nursing home can occur. Again, अगर 2017 का डाटा देखें तो US के अंदर 8500 के करीब केसेस थे, जिसमें से 700 डेथ हुई और फाइनेंशियल लॉस जो है इट वाज मोर देन $281 मिलियन। कार्बापेनियम रेजिस्टेंट एंटेरोबैक्टीरिया की अगर बात करें, इट हैज़ द मोर्टेलिटी ऑफ 30 to 70%, अराउंड डबल एज कंपेयर टू MRSA। resistant to many antibiotics, colistin, tigecycline can be used to treat, but these can be toxic as well. आप जितना ज़्यादा हाइपोटेंसी में जाएंगे उतना ज़्यादा उसकी टॉक्सिसिटी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अगर आप 2017 का डाटा देखें USA में तो तकरीबन 13,000 के करीब केसेस आए
जिनमें से 1100 की डेथ्स हुई और it has financial cost of $130 million. These are few genera of Enterobacteriaceae, the common one and the others. See which one are more commonly being reported at your department. ये तब है जब आपके पास डाटा होगा. So आप जहाँ कहीं भी काम कर रहे हैं, हेल्थ फैसिलिटी में काम कर रहे हैं या फिर कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, तो मेक श्योर और इसको देखें कि आपके पास आपके डिपार्टमेंट में ये किस हद तक कौन कौन सा जो स्पीशीज है वो ज़्यादा रिपोर्ट हो रही है. ड्रग रेजिस्टेंस कैंडिडा ऑरियस. सो इट इज़ एन एमर्जिंग मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट फंजाई फर्स्टली डिस्कवर्ड इन 2009. इट कैन कॉज सीवियर इन्फेक्शंस एंड स्प्रेड्स easily between hospitalized patients and nursing homes. रेजिस्टेंस 2018 में 323 केस रिपोर्ट हुए. 90% isolates were at least resistant to one antifungal and 30% isolated resistant were more than at least two antifungal resistant. मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टाइफाइड, इसके बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इनकी मल्टीपल आउटब्रेक्स देखी गई हैं. तो ये हम देखेंगे कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड होता क्या है, इसकी प्रेवलेंस क्या है और कितना डेंजरस है. सो इट इज़ एक्चुअली डिफाइंड एज रेजिस्टेंस टू 3 फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक यूज्ड टू ट्रीट टाइफाइड, जो कि आगे दी हुई हैं. इट फर्स्ट अपेयर्ड इन 1970 and has since spread globally. Of particular concern is MDR strain of typhoid called H58, which has been identified in many parts of Asia और उसके अलावा दूसरे continents में भी. XDR typhoid is defined as resistant to all recommended antibiotics for typhoid fever, including third generation cephalosporins and fluoroquinolones. According to the weekly field epidemiological report by National Institute of Health Islamabad, a total of 14,360 XDR typhoid fever has been reported in Karachi from January 2017 till June 2021. Multi drug resistant tuberculosis, ये कब होता है? जब TB microbacterium जो है, it is resistant to at least isoniazid or rifampicin, the two most potent TB drugs. The two reasons why multi-drug resistance continues to emerge and spread are mismanagement of TB treatment and person-to-person transmission. आपने लोगों को देखा होगा कि जब भी TB की उनको मेडिसिन दी जाती है तो वो दरमियान में गैप्स दे देते हैं या जैसे ही सिम्टम्स ठीक होती हैं तो वो मेडिसिन छोड़ देते हैं. तो दैट मिसमैनेजमेंट इज एक्चुअली अ मेजर काज ऑफ लीडिंग टूवर्ड दिस मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी. इसके अलावा पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन भी हो सकती है. एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी इज अ फॉर्म ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी विद एडिशनल रेजिस्टेंस टू मोर एंटी टीबी ड्रग्स that therefore respond to even fewer available medicines. It has been reported in over 117 countries worldwide. तो अब हम देखेंगे कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी जो है इसको प्रिवेंट कैसे करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान दुनिया के चंद एक मुमालिक में है जहां टीबी की सबसे ज़्यादा प्रेवलेंस है. सो सोल्यूशन कैन बी क्योर द टीबी पेशेंट द फर्स्ट टाइम अराउंड. ये नहीं कि वो बार बार अपनी मेडिसिन दरमियान में गैप्स दे दे और फिर वापस आए. प्रोवाइड एक्सेस टू डायग्नोसिस, टाइमली डायग्नोसिस. Ensure adequate infection control in facilities where patients are treated. Ensure the appropriate use of recommended second-line drugs. In 2016, an estimated more than 490,000 people worldwide develop MDR-TB. Pakistan is high TB endemic country, standing at 5th position in the list of 30 high-burden countries, with an estimated more than 518,000 TB cases, including 15,000 MDR. The estimated proportion of MDR TB is 4.2% in new patients and 16% in previously treated patients, as per WHO report 2019. The pan resistance, the microorganisms that are resistant to almost all antimicrobials. There are different cases of Acinetobacter, Klebsiella and Pseudomonas that are sometimes pan-resistant in some patients. Now the prevention of MDROs. हमने पढ़ा कि MDROs हैं कौन कौन से.
ये स्प्रेड कैसे होते हैं? तो अब डेफिनेटली द नेक्स्ट कंपोनेंट शुड बी द प्रिवेंशन वन, और जब प्रिवेंशन की बात आती है तो इट शुड स्टार्ट विद इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। डेफिनेटली इसके साथ एंटीमाइक्रोबियल स्टीवर्डशिप भी आएगी। सो द प्रिवेंशन ऑफ MDRO इंक्लूड्स स्टाफ एजुकेशन। किस तरह की एजुकेशन है? उसमें एंटीमाइक्रोबियल स्टीवर्डशिप का कंपोनेंट आता है, उनकी मेडिकेशन का कंपोनेंट आता है, टाइमली आइडेंटिफिकेशन का कंपोनेंट आता है, एटसेट्रा। रिस्क असेसमेंट टू आइडेंटिफाई हाई रिस्क पेशेंट्स, लैब नोटिफिकेशंस, कम्युनिकेशन विद आउटसाइड फैसिलिटीज, हैंड हाइजीन, क्योंकि MDROs can spread from the hands of the healthcare providers. Barrier precautions, contact and enhanced barriers precautions, antibiotic stewardship, environmental cleaning, cohort residents if necessary, understanding contact and enhanced barrier precautions. CDC implemented enhanced barrier precautions for long-term care facilities. Enhanced barrier precautions does not replace existing guidance regarding use of contact precautions for other pathogens, for example Clostridium difficile, norovirus, in nursing homes. So why is that change? So it is actually that we are focusing only on residents with active infections, fail to address the continued risk of transmission from residents with MDRO colonization, which can persist for a long period of time, maybe for months, and results in the silent spread of MDROs. With the need for an effective response to the detection of serious antibiotic resistant threats, there is growing evidence that current implementation of contact precautions in nursing home is not adequate for the prevention of MDRO transmissions. Contact precautions in prevention of MDROs. Are residents with MDROs, when there is acute diarrhea, draining wounds, or other sites of secretions or excretions that cannot be contained or covered, on unit or in facilities where ongoing transmission is documented or suspected. Clostridium difficile infections, norovirus, shingles when resident is immunocompromised, and the vesicles cannot be covered. Other conditions are, as noted previously, a type and duration of precaution recommended. For selected infections and conditions, gowns and gloves upon any room entry, room restrictions except for medically necessary cares. इस स्लाइड में CDC की 2006 की MDRO गाइडलाइंस दी गई हैं that work to prevent MDROs in long-term care facilities. इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं और इस लेक्चर के एंड पे इसका लिंक भी दिया जाएगा. So for relatively healthy residents, follow standard precautions, making sure that gloves and gowns are used for contact with uncontrolled secretions. For ill residents, जो कि आप देख सकते हैं कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में मौजूद हो, and for those residents whose infected secretions or drainage cannot be contained, तो उस कंडीशन में आप contact precautions करेंगे. Obvious इसके साथ है कि आप standard precautions भी कर रहे होंगे. For MDRO colonized or infected patients without draining wounds, diarrhea or uncontrolled secretions, establish range of permitted ambulation, socialization and use of common areas based on their risks to the other patients and on the ability of the colonized or infected patient to observe proper hand hygiene and other recommended precautions to contain secretions and excretions. Resident characteristics, it has 5 C's: cognitive functions, understanding the directions, cooperative, willingness and able to follow the directions, continence of urine or the stools, contained secretions, excretions or the wounds, cleanliness, capacity for personal hygiene. इसके अलावा डिफरेंट कंपोनेंट्स और उनके रिकमेंडेशंस आगे दी हुई हैं कि ग्लव्स कब यूज़ होने हैं, गाउन्स कब यूज़ होने हैं, मास्क, आई प्रोटेक्शन. फॉर एग्जाम्पल ग्लव्स फॉर टचिंग ब्लड, बॉडी फ्लूइड्स, secretions, excretions, contaminated items
for touching mucous membrane or non-intact skin. Gowns during procedures and patient care activities when contact of clothing expose skin with blood, body fluid, secretions and excretion is anticipated. Masks, eye protection during procedures and patient care activities likely to generate splashes or sprays of blood, body fluids, secretions, especially suctioning and endotracheal intubations. Enhanced barrier precautions. A type of precaution between standards and contact precautions. Expands the use of PPE beyond situations in which exposure to blood and body fluid is anticipated. Refers to the use of gowns and gloves during high contact resident care activities that provides opportunities for transfer of MDROs to staff hands and clothing. Now we will see different examples of enhanced barrier precautions. It includes examples of high contact resident care activities requiring gowns and gloves use for enhanced barrier precautions include dressing, bathing, showering, transferring, providing hygiene, changing linen, changing briefs or assisting with toileting, device care or use, central line, urinary catheter, feeding tubes, etc., tracheostomy, wound care, any skin opening requiring a dressing, gown and gloves would not be required for resident care activities other than those listed above, unless otherwise necessary for adherence of standard precautions. Residents are not restricted to their rooms or limited from participation in group activities. Contact or enhanced barrier precautions. Post clear signage on the door or wall outside of the room. Make PPE available immediately outside the room. Ensure access to alcohol-based hand rub in every resident room, ideally inside and outside. Trash can available for PPE disposal. Periodic monitoring and assessment of compliance. Provide education to the residents, family and visitors. Adherence to other measures including hand hygiene, environmental cleaning and cleaning, disinfection of medical devices. So these are the reference of this study and learning opportunity that we had together. और इसके जितने भी references हैं जैसा मैंने start में बयान किया, you can go and obviously click each and every link और उसमें आप further जो है MDROs को पढ़ सकते हैं